तुम ये सोचो ना 2 साल वाला तो कम से कम 60 तो हो जाते। हाँ ये होता था तब मैं क्या बात करूंगी क्या हो रहा अभी अपन एक दिन तो बार में तो कुछ अभी अपन बूढ़े नहीं हुए अभी और भी टाइम है देने के तो तुम तो टेंशन ले दिया मेरा यहाँ पर यो लो ये ना बस हाँ और तो आप बस नहीं आपको काट लिया अभी तक तो होते हैं दिमाग खराब क्यों भैया भाई इसका मार्क्स नहीं पता है ऑन करके मेरे साइड वाली लड़की क्लास में आप नहीं 70 नहीं 35 फर्स्ट टाइम मेरे साथ नहीं तो वो फर्स्ट टाइम देते ना ऐसे ही ऐसा लगा कि मेरा लेट कर लिया इतना काम कर अरे चीज यार हमारे मेरा है 43 लग रहा है तेरे नाम से उसको जाके लो ऐसे बाबा और भाई हमारा जो मोबाइल है ना उसके अकॉर्डिंग में बता हां मेरा कुछ भी मेरा ठीक है चलो ठीक है मोबाइल में मत ऑन करो पहले दोनों मैम देख बोर्ड में ब्लर दिखता है हां ये वाला लेते ये वाला गायब हो गया पीपीटी इसमें डाउनलोड किए हाँ एक बार और एक बार करो okay meanwhile revise verbs subject verb agreement and verbs then we'll start with the new topic okay
Okay. So, good evening, all of you. Today we'll be starting with tenses, right? What are tenses? Tenses क्या है? What are tenses? Yes. क्या है tenses? काल. आप इसको क्या बोल सकते हो? टाइम. टेंसेस क्या है? नथिंग बट टाइम. समय की बात हो रही है, फिर चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, मतलब वर्तमान, भविष्य और भूतकाल. ठीक है, इनकी बात की जा रही है. अब अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम, जब जहां तक हिंदी की बात है, बहुत इजी है समझना. ठीक है, इंग्लिश में इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स. ठीक है, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी. वर्ब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? V1, V2, V3, V4 एंड V5. ठीक है, ये डिसाइड करता है टेंस. यस और नो? वर्ब्स क्या डिसाइड करते हैं? टेंस डिसाइड करते हैं. सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंट टेंस की. अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस किसमें डिफाइन हुआ है, फर्दर किसमें क्लासिफाई हुआ है? फर्दर 4 टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं फर्स्ट इसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है? V1 और V5. V1 और V5 भी आप यूज करते हो. V1 किसके साथ यूज करते हो? प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू. ओके, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट. V5 किसके साथ यूज करते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में? V1 और V5. वहीं अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में आप क्या यूज कर रहे हो? इज, एम, आर प्लस V4. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या यूज कर रहे हो? हैज और हैव प्लस V3. हैज और हैव प्लस V3. क्लियर? क्या यूज किया आपने? हैज और हैव प्लस V3. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या यूज कर रहे हो? हैज और हैव बीन. V1 या V3? V3 या V1? We'll see this. ठीक है, this we'll see. Now the question is कि हैज और हैव किसके साथ यूज होता है? हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. अब आते हैं हम पास्ट में. पास्ट में क्या यूज होता है? V2. क्लियर? पास्ट में क्या यूज होता है? V2. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या यूज हो रहा है? वॉज और वर प्लस V4. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज हो रहा है? हैड प्लस V3. क्लियर? नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? हैड बीन. ठीक है, हैड बीन. वील बी सीइंग द एग्जांपल्स. ओके, क्या यूज होगा? हैड एंड बीन. क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, और एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इंडेफिनिट क्या है, सिंपल क्या है. सिंपल इंडेफिनिट कुछ नहीं है. ठीक है, आप उसको सिंपल नहीं बोलते, आप उसको इंडेफिनिट ही बोलते हो. क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप क्या यूज करते हो? विल और शैल. शैल किसके साथ यूज करते हो? शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी. बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप ये क्या यूज करते हो? विल. क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हो? विल और शैल प्लस V4. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हो? विल और शैल प्लस हैव. क्लियर?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हो? विल हैव बीन, शैल हैव बीन. इज इट क्लियर? समझ में आ? यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग? प्लीज नोट इट डाउन. सभी को समझ में आ रहा है? टेंसेस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट टेंसेस का बेस क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. अगर आप देखो यहाँ पे तो हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस किया है बेसिकली. ठीक है, अब हम इनका यूजेज देखेंगे आगे. Do is V1, does is V5, did is V2, done is V3, doing is V4. All you have to remember is the chart of verbs, okay? Because it will become easy to identify the error once you are aware of the form of verbs. Done? Completed? Okay, next. Now let's see the usage of these verbs. Okay. Expresses the action that is currently going or a state that generally exists. ठीक है, प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज करते हो? जो चीज हर दिन होती है या जो एग्जिस्टेंस में है, जैसे कि सूरज हर दिन उगता है. क्लियर? तो ये क्या है? एग्जिस्टेंस में है. आर यू ऑल गेटिंग इट? तो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस. नाउ प्रेजेंट, अब देखिए यहाँ पे सिंपल की जरूरत नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि सिंपल इज नथिंग बट इनडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस.
I'll remove simple. This action is simply mentioned and nothing can be said about its completeness. देखो, अगर कोई चीज जैसे कि I am teaching और I teach, पढ़ाना क्या है, मेरा प्रोफेशन है, तो दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग, बट क्या ये कब कंप्लीट होगा इसका कोई एश्योरेंस है? बिकॉज ये डे टू डे एक्टिविटी, तो जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? शी राइट्स अ लेटर, हैबिचुअल एक्शन. ठीक है, वो हर दिन लिखती होगी या तो वो कभी कभार लिखती होगी, बट वो लिखती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज कर सकता है क्या? द सन सेट्स इन द वेस्ट. इस ट्रूथ को कोई चेंज कर सकता है? नहीं. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड. दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप. कमांड, ऑर्डर जिसको आप बोलते हो, ठीक है. दूसरा है रिक्वेस्ट. क्लियर? और लास्ट है एडवाइस, जिसको आप क्या बोलते हो? सजेशन. इज इट क्लियर? गेटिंग इट? समझ में आया? हियर कम्स द ट्रेन. अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जितने भी होंगे, आश्चर्यचकित, जहां पे आप आश्चर्य शो कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ग्रीफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, तो वो किस में रहेंगे? एक्सक्लामेटरी से. इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट. ये क्या है? हेडलाइंस. न्यूज़पेपर में जितनी भी हेडलाइंस होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेक्स्ट, बाबर कट्स द हेयर. दिस इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी. सो जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज आएगी वो हमेशा कौन से टेंस में रहेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन. Again, this is one of the most important topics from narration voice point of view. I'm repeating. Okay. Even in question tags हमने verbs के through ये पता कर लिया था कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, राइट? बट नाउ यू आर स्टडीइंग टेंस, सो इट विल बी मच मोर इजियर टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस. ओके, बट द ट्रिक इज फॉर्म ऑफ वर्ब्स. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स. ऑर्डर, कमांड, ठीक है, ऑर्डर और कमांड एक ही है. रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन. अब आपको ये भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ऑर्डर कौन सा है, रिक्वेस्ट एंड देन एडवाइस और सजेशन.
बाकी स्टूडेंट्स की छुट्टियां खत्म नहीं हुई अब तक, but exams are approaching now. You people have to be serious, right? Diwali is over. Done? Okay, next. Present continuous tense. Now it is used to express action that is currently in progress. मतलब जो हो रहा है, ठीक है, जो अभी चल रहा है. जैसे कि she is playing chess. This is a continuous action, right? Next, is she still reading? अब यहाँ पे जो still है, क्या वो अभी भी, मतलब is it in action right now as well? So there are certain words which you have to keep in mind, like now, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, at present. ये सभी क्या शो कर रहे हैं कि जो भी एक्शन हो रहा है वो कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो दीज आर द कीवर्ड्स. Okay, next, cars are becoming costlier day by day. If there is a change in present situation or state, तब आप कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? नेक्स्ट, आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस टुमारो. तो इवेंट और एक्शंस कब होने वाले हैं? फ्यूचर में. तो बट कौन से टेंस में बता रहे हैं आप उनको कि मैं ऐसा करने वाली हूँ या करूंगी? कौन से टेंस में होगा ये? फ्यूचर में. बट आप कौन से टेंस में बोल रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Okay, so you have to you have to differentiate between the tenses. ये फ्यूचर इवेंट है बट बोला कब जा रहा है? अभी. क्लियर? कंटिन्यूटी है अभी. प्लीज नोट इट डाउन. All of you have to respond, not one or two. I hope that was clear in the last class. Are you all getting it? What's so funny?
Done? Okay. Next. Okay. Let's see. Present perfect tense expresses those actions that have been finished recently. ठीक है, मतलब जो अभी अभी खत्म हुए हैं. जैसे कि I have written a letter. It is the best book I have ever read. I have already taken my lunch. Have you ever been to London? So these are in which tense? Present perfect tense. Clear? Now, words like already, so far, as yet, just now, recently, lately, ever. These are acting as what? These are acting as keywords to identify the tense. कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नोट इट डाउन. ओके, इज इट करेक्ट? हैज और हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं? व्हाट डू वी यूज विथ हैज एंड हैव? वी यूज V3. Is read in V3? Absolutely, the spelling is same, but you pronounce it red. ठीक है, आप क्या pronounce करते हैं इसको? Red. Clear? Note it down. Completed? Okay, next. अब देयर वाज अ कंफ्यूजन कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब कौन सा आएगा? कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? वेरी गुड, तभी आप में से किसी ने B3 कहा था. ठीक है, हैव बीन के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, राइट? तो कौन सा वर्ब आएगा? V4. Now if you can see, present perfect continuous expresses those actions that have begun in past. ठीक है, but are still in progress. ये शुरू कब हुए हैं? No idea. ठीक है, idea as in tentative है. ओके, बट ये खत्म कब होंगे? नो आइडिया. ये अभी भी चल रहे हैं, ये पता है हमें, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. शुरू हुए थे, अभी भी चल रहे हैं, इसलिए परफेक्ट भी है और कंटिन्यूएशन में भी. सो लेट्स सी, begun in the past and are still in progress. The baby has been sleeping since morning. कब से? सुबह से. But the process is still in continuation.
For how long have you been eating? For how long मतलब कितने देर से, अभी भी वो चीज चल रही है. Next, used with the phrases like for, since, how long, all the time, all the week. ठीक है. She has been crying all the time. Ram has been living here for, रह रहा है कितने सालों से, 10 सालों से, पर अभी भी रह रहा है. ठीक है. तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नोट इट डाउन. Done, all of you? Next. Now past tense. Past tense shows actions that previously happened or existed. ठीक है. मतलब जो चीज existed as in state कि ये past में हुआ करता था. ठीक है. Now it expresses an action that happened or finished in the past. She wrote a book. उसने एक book लिखी थी. She came last week. Now words like yesterday, ago, last, the other day, the day before are used in past indefinite tense. Clear? I played cricket in my childhood. Now this is a what? A past habit. Okay. It is high time you repaired the TV. Again, this action happened in the past. Note it down. जो भी चीजें रेड में हाईलाइटेड है, those are of key, those are of due importance. Why? Because error detection जब आप solve करोगे, you will find everything correct, but then these words are the ones which will be making difference. ठीक है. ये जितने भी keywords हैं highlighted है रेड में notes, these are all the keywords. Because while solving error detection, it becomes very tedious to identify the tense. आपको मोर और लेस सब सही लगता है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? जहां पे ये वर्ड्स पे आप फोकस करना शुरू करते हो.
कंप्लीटेड. इट इज हाई टाइम, मतलब बहुत टाइम हो चुका है कि आपने टीवी को रिपेयर किया है. मतलब सी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज की सर्विसिंग ड्यू है तो आप बोलते हो ना कि इट्स हाई टाइम नाउ, इट नीड्स टू बी यू नो रिपेयर्ड. उस वे में बोला जा रहा है इट्स हाई टाइम दैट वी मेट, मतलब बहुत टाइम हो चुका है, मतलब कोई चीज बहुत पहले हुई थी और अब तक हुई नहीं है. नेक्स्ट. Okay. Past continuous tense. Now, what is past continuous tense? It expresses an action that was in progress for some time in the past. मतलब continuation में था, but कब? Past में. She was calling me. अब देखो आपने किसी को कॉल किया, कॉल कट होने के बाद it ended. But when it was in continuation, तो वो किस में आ गया? Was. While I was reading, my wife was watching टेलीविजन. ठीक है. वाइल कब यूज करते हो? जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं. ठीक है. जब भी दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि वाइल आई एम टीचिंग यू ऑल आर राइटिंग, तो ये कौन से इसमें होंगे? कंटिन्यूएशन. This tense is used when two actions were simultaneously in progress in the past. While I was walking in the field, I found a mobile. Now this is very important. Clear? Note it down. Completed. Next. Expresses an action that has been completed long time ago. ठीक है, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया. Had he left for USA, I had hoped that he would pass. I had hoped that he would pass. Next. अब आप ये नोट को ध्यान से पढ़िए एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. What did you understand? जब दो चीजें पास में हो चुकी होती हैं तो पहले वाले को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरी वाले को पास्ट इंडिफिनिट टेंस. जैसे कि अगर आप ये सेंटेंस को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आई हैड होप दैट ही वुड पास, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ?
पास्ट परफेक्ट वो ठीक है, बट पहले एक्शन कौन सा हुआ है सीक्वेंस में? दैट ही वाज होपिंग, ही और शी वाज होपिंग दैट द पर्सन वुड पास। तो फर्स्ट जो एक्शन रहता है सीक्वेंस में, मतलब टाइम के हिसाब से जो पहले हो रहा है वो किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट में। वहीं जो दूसरा एक्शन है वो किस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Completed? All of you? Done? Now past perfect continuous. Okay? It expresses an action that started in past, continued for a period of time and ended in past. ठीक है? शुरुआत भी पास्ट में हुआ, कुछ टाइम के लिए चला और पास्ट में ही खत्म हो गया. I had been trying to contact you. ऑब्वियसली ये बहुत इजी है समझने के लिए. क्या आप किसी से कांटेक्ट करना चाह रहे थे पास्ट में, आपने कोशिश की, कुछ देर वो प्रोसेस चला और फिर वो खत्म हो गया. She had been playing tennis when the news of her selection came in. Now it expresses an action that happened in the past and its effect was still visible in the past. मतलब वो चीज पास्ट में ही हुई और उसका इफेक्ट भी कब तक ही विजिबल था? सिर्फ पास्ट में. ओके, नोट इट डाउन.
Completed? All of you? Next. Okay. So, future tense, it expresses an action that has not happened yet or a state that does not exist but is expected to take place in future. फ्यूचर टेंस वो है जो पहले कभी था ही नहीं या हुआ ही नहीं बट होने वाला है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड इन फ्यूचर. नाउ फिनिश्ड के बदले आप ये भी बोल सकते हो कि स्टार्ट भी कब होगा. स्टार्ट भी कब होगा, ये फ्यूचर में ही होगा, तो ही तो फिनिश होगा. जब कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हुई तो वो फिनिश कैसे होगी. तो इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एंड एज वेल एज फिनिश इन फ्यूचर इटसेल्फ. यस, शी विल कॉल यू. There is no need of question mark here, it's a full stop. Unless she works hard, she will not pass. Now please pay attention. Error detection in इस तरह के क्वेश्चंस पे आता है. ठीक है, आप नोट ध्यान से देखो. टू शो कंडीशनल एक्शंस, present indefinite tense is used with the words like unless, until, when, if. ठीक है, अगर आप unless और until की बात करो, ये दोनों कैसे वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं. ठीक है, इनके साथ आप कभी भी डोंट, डिडंट, डजंट यूज नहीं करते हो, पहला रूल. दूसरी चीज, अनलेस शी वर्क्स, अब ये वर्क्स कौन से टेंस में है, V5, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो अगर हम कोई भी कंडीशनल, मतलब अगर हम कंडीशन रखते कि अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो पास नहीं कर पाएगी, शी विल नॉट पास. दिस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट. और ये किस टेंस में है, यू हैव टू मेक श्योर कि कंडीशनल पार्ट कौन सा. जो कंडीशनल पार्ट है दैट विल कम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट द पार्ट which is about to happen that will come in future indefinite. कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा. समझ में आया. वहां पे क्या था जो पास्ट में हो रहे हैं, अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रहे तो व्हाट वाज द रूल, पहला एक्शन कौन से टेंस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट. और जो सेकेंड एक्शन हो रहा है सीक्वेंस में वो कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट. क्लियर, नोट इट डाउन. Done? Okay. Next.
now if you can see, it expresses an action that will be in progression in future, that will be in progression in future, मतलब जो future में continuation में रहेंगे, right? She'll be cooking food at this time tomorrow. Clear? Next, future perfect tense. It expresses those actions that will certainly be finished at a point in future. मतलब शुरू भी future में ही होंगे और एक point पे future में ही खत्म भी होंगे. She will have submitted her project by Monday. ठीक है? I am highlighting the keywords. Okay? Just focus on the keywords. I will have completed this project. कौन सा tense है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि बिफोर क्या आ गया, कंडीशन शो कर रहा है कब तक. ही विल हैव रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स. टू शो एन एक्शन इन विच व्हेन और बिफोर इज फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो वहां पे क्या यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वही चीज हमने कहाँ पे देखी, फ्यूचर इनडेफिनिट में. फ्यूचर इनडेफिनिट में भी क्या यूज हो रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके साथ यूज होता है, कंडीशनल टेंसेस के साथ, कंडीशनल वर्ड्स के साथ. क्लियर? नोट इट डाउन. Sorry. डन? आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे, बिकॉज मोर और लेस एक टाइम के बाद, मतलब अगर आप पहले के 6 टेंसेस छोड़ दो, 6 या 7, उसके बाद जो लास्ट के 4-5 है उनमें स्लाइट कंफ्यूजन है. गेटिंग इट? और वो कंफ्यूजन भी नहीं है अगर आपको वर्ब्स क्लियर है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब, तो वहां पे भी कंफ्यूजन नहीं है. बट आपको एरर आइडेंटिफाई करते टाइम इन वर्ड्स को, इन नोट्स को ध्यान में रखना है. ठीक है? क्लियर? डन? ओके, नोट इट डाउन. Okay. Future perfect continuous tense. It expresses an action that continues up to some point of time in future. ठीक है? She will have been washing clothes for 3 hours. Okay? I shall have been reading for 4 hours. He will not have been living in Delhi since 1980. Getting it? तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, since for. Okay, please note it down.
completed. Done. Now आप सभी को टेंसेस समझ में है, राइट? क्लियर? I want you to tell me one thing. I have a question for you all. जहां तक हम बात कर रहे हैं इन टेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट? यहाँ पे क्या जो टास्क शुरू हुआ है वो कंप्लीट हो रहा है? मतलब कंप्लीशन है, ड्यूरेशन पता है ना आपको? अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो, आपको पता है कि ये चल रहा है या ये होता है हर दिन, पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में होगा, पता है। कंटिन्यूटी मतलब इसमें एक एंड है कि नहीं, यहाँ पे प्रोसेस होगा। कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, डू यू थिंक यहाँ पे है कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी है, ये भी पता है कि पास्ट में ही होके रुक जाएगा, पास्ट में या प्रेजेंट में। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी सेम चीज है, यस और नो? फिनिश होगा, इसमें भी होगा, यस और नो? इसमें भी होगा। अब अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ये जो 4 टेंसेस मैंने हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे द थिंग इज, क्या यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो रहा है? शुरू तो होगा, पहले हो चुका है, पहले अभी होगा, पहले हो चुका है, फ्यूचर में होगा, पर ये कब खत्म होंगे इनकी कोई अश्योरेंस है? नहीं है। तो जब भी हम पढ़ेंगे नरेशन, दैट इज स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो कभी भी ध्यान में रखिएगा इनको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका आपको डेड एंड नहीं पता है कि ये कब खत्म होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन चेंज कहाँ पे हो सकता है? जिसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड, ठीक है? समझ में आया ये? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू टेल यू, ओके? नाउ लेट्स switch to the questions. I want you to solve the questions. Please note down the questions and solve it.
Done? Okay. The question is so complicated that it could not be solved immediately. Yes, where is the error? The question is so complicated that it could not be solved immediately. The question is so complicated. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इज यूज किया है. दैट इट कुड नॉट बी. कैन प्रेजेंट में यूज होता है, कुड पास्ट में. ठीक है, और आप इमीडिएटली की बात कर रहे हो, मतलब अभी की बात हो रही है. यस, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली. Is it clear? Got it? Next. By this time next year, he has settled himself in London. By this time next year, he has had settled himself in London. Has had कैसे होगा? He will have. क्योंकि आप अगले साल की बात कर रहे हो. By the time next year मतलब अगले साल इस टाइम तक. तो has had कैसे यूज होगा? Getting it? He will have settled himself in London. Newspapers told us about the events that happen all over the world. We have just read the rule. Very good. तो क्या told use होगा? Newspapers tell us about the events that happen all over the world. Is it clear? Got it? Next set of questions. Yes. Yes. Done?
Meenu, along with her parents, is going to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there. Is it correct or incorrect? No. Why? Tell me the rule. Meenu, along with compound conjunction, this is subject 1, this is subject 2. Verb agrees with the first subject. Verb agrees with the first subject. Meenu, along with her parents, is going to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there. No error. Okay. Next question. The enmity between the groups, two groups, has reached a level where reconciliation has become impossible. Very good. Had reached a level where reconciliation has become impossible. So is it correct? Yes. Had. तो दोनों ही जगह had आएगा. Had been by. Why? It will take had at both the places. It will take had at both the places. यहाँ पे हम टाइमिंग नहीं देख रहे हैं सेंटेंस की, हम बता रहे हैं कि इस हद तक हो चुका है कि अब कोई रिकंसिलेशन नहीं हो सकता. इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क. इट इज हाई टाइम that you started this work. Clear? Got it? Next, if I was you, I would have told him to do this work on his own. Very good. If I were you. काश की बात हो रही है तो काश में क्या होता है? आप क्या यूज करते हो? वर. Clear? So is tense is clear? Do you have any doubt? We'll be solving questions of error detection on this tomorrow as well. Okay. I would like you to revise all the topics till date we have covered. Okay. So that it will be a quick revision on error detection. Clear? जितने भी टॉपिक्स अब तक हुए हैं मेक श्योर कि आप सभी रिवाइज करो. कल हम एक एरर डिटेक्शन का रिविजन लेंगे. Okay. So for today we'll stop here. Tomorrow we'll continue with this. Okay. Error detection as well as we'll start with a new topic. Okay. Thank you.